So now coming to the lesson part, and we will start climatology. तो climatology रे जहाँ prelim point रो हमें पढ़ीबा, जहाँ भी तुम्हारे prelim रे आसुची, we will try to cover everything that is coming in prelim. Now first of all जदि हमें देखिबा कि composition of the atmosphere. Obviously gases कथा मु जिबिनी and जदि composition रे तुम कहबा कि which are the gases is the maximums ए तो एमती जानचे समझते तो composition हमें आगे देखि देबा prelim रे कौन थे atmosphere. तो first let's say you are having earth or beloved earth. The atmosphere is that is the concentration of gases. So atmosphere kono simple all the gases that is concentrated and that surrounds or engulf our earth. Our earth को engulf करके रखिची और surround करके रखिची those gases. These gases are called as the atmospheres. Okay, atmospheric gases. So atmosphere is composed of what? Composed of different gases, water vapor, plus here would be also space, some space also there. So these are, that means atmosphere gases achi, water vapor achi and space as well. So here in lesson जेतरा में geography रे खाली पढ़ू, basically we don't include that space, we will include only gases and the water vapor that consist of our atmosphere. Okay, that will consist of our atmosphere of beloved earth atmosphere. So earth रो जदि हम कहबा कि atmosphere, why we are having atmosphere? Atmosphere काहे कि अछि because of the gravity. Because of the what? Gravity. The gravity of the earth is responsible to have the atmosphere. Okay, the atmosphere एथिपई अछि because of the gravity of earth. Everyone fine? Okay, so because of the gravity of earth we have an atmosphere. Everyone fine? Is it clear to all? Okay, Yes, so sir. Yes, sir. gravity is the factor. Now the thickness of atmosphere जदि हमें देखिबा what will happens जदि तम कहबो कि sir thickness of atmosphere obviously close to the thickest part would be close to the earth. ध्यान से सुनिबो atmosphere जो thickness earth को लागी कि सबटो अधिक as we move altitude रे हमर जतरा height बढ़ी बढ़ी जिवो the thickness of atmosphere reduces or that would be thinness, or I would say the thinness will increase. That means earth को लागी की जो atmosphere अच्छी that will have the maximum thickness. The maximum thickness will occur close to the surface of the earth. Now anyone, then why close to the surface of the earth we are having maximum thickness? The maximum thickness close to surface कौन पे? Because of the maximum gravity, because gravity depend on what, that is the what, mass and distance. तो mass out distance ऊपर तोवर gravity को calculate करा जाए और that is the two factors. So as I move from the surface to the altitude or towards the space, the distance increases, hence the gravity will decreases. Okay, and that is why what will happens, everybody is able to join, ऑटोमेटिक जॉइन होची ना, का तो डिफिकल्ट होनी? ओके सर, ऑटोमेटिक स्क्रीन तो पूरा अच्छी क्लियर अच्छी समझ तुमको? यस सर. ओके, now that means हमें कौन पढ़ेले कि earth is having atmosphere. Atmosphere कौन? The gases and the water vapor there that all consist together to form the atmosphere of the earth. Okay, that is surrounding our beloved earth. Now atmosphere हमें कहले कौन पाई? Why atmosphere exists? Because of the gravity. Because of gravity the atmospheres exist. Now then gravity कहाँ पर depend करे? Mass and obviously distance. तेणु करिकी the density of the atmosphere surface रे जदि हमें देखिबा, close to the surface is maximum. As I move from the surface towards the space or हमें कहबा कौन? Sky, the what density of the atmosphere will reduces because of the gravity, or the gravity will also reduces तेणु करिकी. Now comes to the gases. Next हमें देखिबा के gases present in atmosphere. atmosphere जो gases अच्छी ताकू देखिबा. The maximum gases समझते जानते 78% is having your nitrogen. The nitrogen is the fast, that to be 78% of the total gases present in the atmosphere, nitrogen. Then comes to your O2 oxygen.
that will consist almost, I would say, 21%, almost 21%. That means this two together 99%. So now we are left only 1% of the other gases. So other gases that means in other gases it would be 1%, and within that 1% the maximum would be what, that is now comes to the CO2. It would be CO2, which is 0.93%, 0.93% carbon dioxide. Apart from carbon dioxide, you will have neon, that is the what, 0.03, neon 0.03%. So like this. So the three dominant gases that we atmosphere देखिवा, they are the that is nitrogen 78%, oxygen 21%, other gases रे हमें 1% देखले. Carbon dioxide रो percentage केते, that is the 0.93%. तो almost हमें कहवा केते 1% पाखापाखी भी almost तुम देखि परबो, that is मतलब हाँ तार concentration मध्य बहुत अच्छी. So these are the three important gases को हमें देखिले. बाकी नाइट्रोजन तो हमें जानी ना, ऑक्सीजन रो काम तो समझते जानी है ना, एंड कार्बन डाइऑक्साइड. नाउ कम टू द CO2 पार्ट को हमें देखिबा कि कार्बन डाइऑक्साइड जति न थांता व्हाट वुड हैपन. ना कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्वियसली कोन पे दरकार, फोटोसिंथेसिस पे दरकार समझते जानी छ. एंड कार्बन आल्सो वन ऑफ द इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर बॉडी, दैट इज हमर जो बॉडी रे बोन्स कथा नहीं छ है ना. तो ये सब इवन तमर हमर जो कोन टिश्यूज रे कथा नहीं छ, तो कार्बन ह्यूमन बॉडीज रे मध्य रही. तो इंपोर्टेंट एलिमेंट आम कहीपर. तेणु करके कार्बन रो सिग्निफिकेंस तो रही फॉर द ह्यूमन बॉडी. इवन आमर ह्यूमन बॉडी रही, एनिमल्स कथा नहीं जो, प्लांट्स कथा नहीं जो, कार्बन आल्सो इंपोर्टेंट फॉर देम. एंड आल्सो कार्बन कौन करे, टेम्परेचर को मेंटेन करे है ना, कहार आटमोस्फेरिक टेम्परेचर को मेंटेन करूची. जदि कार्बन डाइऑक्साइड न था or there were no atmosphere, जदि तुमको कहजबो if there were no atmosphere, जदि atmosphere न थांता कौन ही थांता, what could have the surface of the earth? The surface of the earth could have been a cold desert. Done everyone? If there were no atmosphere, just imagine if there were no atmosphere, your beloved earth surface could have been a cold desert है ना, जेटा गोटे cold desert रे convert हेई थांता. But we are fortunate enough to have the atmosphere, and that will what, maintain the temperature of the surface of the earth. Done everyone? It's acting as a blanket, acting as a blanket है ना. ये कौन करुच्ची, ब्लैंकेट हिसाब रे काम करुच्ची. और यू मे से ग्रीन हाउस गैस, और द इट्स एक्टिंग एज ए ग्रीन हाउस, और यू मे से एक्टिंग एज ग्रीन हाउस. सो गैसेस आर एक्टिंग एज ग्रीन हाउस. डन एवरीवन? हे जिवो ना, इथर किछि डाउट अछि कार कहि दिए तिकरे एवरीवन? Nice, sir. Clear. Clear? Now if I say greenhouse, then why it is called as the greenhouse? यदि तुमको कहजबो atmospheric gases they are also called as the greenhouse, then why they are called greenhouses? Because or greenhouse or I simple मु कहबी जदि ताको कम जाको glass house भी तमे कहि परिबो, because they are opaque to the what, long wave. ए माने opaque काको, they are opaque to long waves, but they are transparent to short waves. Okay नहीं ना, एटा बुझा पड़िबन काको everyone? Clear? Let's say the sun is here. How it is, sun is here. Now there is sun. Now the electromagnetic waves which is coming from the sun is called as short waves. आपको हमें कौन को short waves. Okay. जो short waves था that can easily enter through the atmosphere and reach the surface of the earth. But earth जो तमर temperature को receives करूची दिन रे ताकु से राती हेले पुनी छाड़ी दिए, जोड़ा कि long waves जहाँ को हमें कहो long waves. Okay, जहाँ को हमें कहो long waves. These long waves को कैप्चर करे किए तुम्हारा atmospheric gases and hence they act as a glass house বা greenhouse effect. हमें जहाँ को greenhouse effect. Done everyone? Sir. Clear to all? Everyone? Everyone कहले समझते ना? Clear? Should I move? Yes sir, yes sir, yes sir. सर लॉन्ग वेव शॉर्ट वेव बोली केमती जानिबो सर? बहुत बढ़िया कथा. लॉन्ग वेव शॉर्ट वेव बोली केमती जानिबो ना, देखो सिंपल
केमिति जानिबो बिकॉज जो सन ठू जो तमरो एनर्जी आसुची एमानकर बहुत एनर्जेटिक एंड आंकर फ्रिक्वेशन बहुत अधिक यार जो एमती पूरा जिगजाग हेई थाए आंकर लेंथ देखो शॉर्ट सेथि पे ये जिगजाग और लॉन्ग वेव्स एथि पे हेई जाए कारण जेतले तमरो सरफेस को आसी गेला अर्थ सरफेस रे रिसीव कला परे जो हमर एनर्जी टा अर्थ छाड़िबो अर्थ मु कहूनी कि अर्थ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस व्हेन इट रेडिएट्स बैक जाको हमें कहो रेडिएशन तो ये अर्थ भी रेडिएट करे जो टेम्परेचर से दिन बेले नौची ताको पुणी रात्रि छाड़िबो एंड व्हेन इट लिव्स टू द एटमॉस्फेयर दैट टाइम्स जो एनर्जी रो जो स्ट्रेंथ थिला से कमी जिवो नाउ इट विल मूव्स लाइक दिस तार लेंथ देखो लॉन्ग लॉन्ग देखाउची इट्स नॉट लाइक जिगजैग पूरा एमती देखा जाऊ नहीं तेणु यार कोन लेंथ टा लॉन्ग रही तेणु करिकी जदि सर्ट रहिबो कोनसी जिंस जेमति कि गोटे लाइट को आम हाथ में कैप्चर करें बट गोटे रड को कैप्चर करुचे सेमती यार गोटे दिन लेट्स से वाटर मु कहि क्या तार एते से मतलब पतला जे से मतलब खसिकी पलैज सेमती आटमोस्फियर जो गैसेस अच्छी ये जो शॉर्ट वेव्स था ये एते पावरफुल थाए कि इट कैन इजिली एंटर थ्रू द आटमोस्फेरिक गैसेस बट जो अर्थ से टेम्परेचर को रिसीव करुच्ची यूज करुच्ची तापर पुणी जो रेडिएट करुच्ची से एनर्जीटा लॉन्ग वेव्स होची जोटा कि तार लेंथ अधिक था और जब लेंथ अधिक रहिबो कौनसी जिनस को कैप्चर करवा इजी गोटे जमी सूताटीए तार लेंथ अधिक रहा ताको जल्दी धरी पकेब बट सर्ट वेव्स सर्ट लेंथ हेल्ले धरवा डिफिकल्ट तो सेमती तो आपको जो गैसेस अच्छी दोज गैसेस प्रेजेंट इन द एटमोस्फियर बिकॉज ऑफ द लेंथ इज लॉन्ग सो दे कैन कैच इट इजिली डन एवरीवन नाउ Yes, sir. है ना से ताको इजिली कैच करि परिबो ओके सर रूम रे शॉर्ट वेव हबो कि लॉन्ग ऑब्वियसली लॉन्ग हबो now we will comes to the structure of atmosphere तो ये थे आम देखले कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर कौन तार डिफरेंट गैसेस को देखले नाउ कम्स टू द जदि एटमॉस्फेयर न था मुझे तुमको कहली कौन होता व्हाट कुड हैव बीन हैपेंड और द व्हाट कुड हैव बीन द रिजल्टेंट इफेक्ट कुड हैव बीन द कोल्ड डेजर्ट ध्यान से मन कोल्ड डेजर्ट होता अच्छा मत यहाँ एनीवन कहि परियो कि व्हाई इट कुड हैव बीन कोल्ड डेजर्ट रादर देन द हॉट डेजर्ट let's say if there were no atmosphere okay no gases were there so why it could have also hot desert then why it's not turning to be hot desert it could only cold desert why anyone cold why try करो कहीं भी सर कार्बन डाइऑक्साइड हीट को ऑब्जर्व करे बहुत बढ़िया सिंपल कौन होची जो गैसेस ग्रीन हाउस प्रेजेंस होची गैस इफेक्ट the GEGs जाको हमें कहूचे ग्रीन हाउस गैसेस दैट कुड बी योर CO2 हेई परे तमरो वाटर वेपर हेई परे कि तमरो CFCs वगैरह हेई परे जहां पे होची तमरो मीथेन फिथेन सब ऑल दिस गैसेस नाइट्रोजन है ना मिथेन ये तमरो कौन होची दे विल कैप्चर द हीट को टेराफ्ट कहउचंदी तो एमाने जदि प्रेजेंस न रहइबो ना राति रे जो हमरो राति रे एते कोल्ड हबो है ना तो एठी रही हबोनी आ सरफेस रे कोल्ड डेजर्ट हेइजबो है ना तेणु करके एटा कौन होची गैसेस एमाने कौन करूची गोटे हीट को कैप्चर करके रखुची एंड दैट हीट बिकॉज ऑफ दैट हमरो जति की बॉडी पई टेम्परेचर दरकार सेति की टेम्परेचर और गोटे हम कर नॉर्मल सी से रखुची मेंटेन करूची ना स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर ये तो थिला तुमको एथरो बेसिक क्वेश्चन आसी जबो एथरो एंड एथरो तुमको टेस्ट सीरीज रे भी क्वेश्चन मिली जबो एंड आल्सो प्रीलिम्स रे भी क्वेश्चन आसीवर चांसेस अछि now comes to the structure of atmosphere let's say this one would be acha English is now fine to all anyone is facing problems or should I use bilingual or this one is fine to all नो नो प्रॉब्लम सर fine to नो all प्रॉब्लम okay fine so let's say this one is surface this one is surface of what earth this one is earth surface and we will go through the what structure of atmosphere as I move on the structure of atmosphere what it would look like this it will look like this you have to also just a minute you can also draw by yourself as well
So first one is your what? Troposphere. The first one is troposphere. Then comes to your what? Stratosphere. Then is meso. Then comes to your what? That is the thermospheres. Okay, now it would be thermospheres. Okay, then tomorrow it exosphere ଆସିଯିବ. So that would be exosphere. Now these are the different layers. ଆମେ ଦେଖିଲେ atmosphere ର different layers. Now here ଏଇଟା ଟିକେ ତୁମକୁ important ଜିନିଷ ଏଠି ମନେ ରଖିବ, ବହୁତ ସାରା ଏଠି ଦେଖାଯିବ ତୁମକୁ. ନା troposphere. ନା troposphere କହିଲେ the first layer of the atmosphere which is attached to the surface. ध्यान से देखो, this layer, the first layer, so this one up to this, now this one up to, so this lines moves like this, the lines move like this. Okay, so this one moves like this. So initially तमे देखिबो ना तमे कहबो ए लाइन कोन ना, this one is, let's say this side minus temperature, minus जेमति कि -20, -10, -5, 0. ना एपटे असले 5, 10, 20, 30. This side positive, this side negative temperature. That means ये जो line तमे देखो छो, this line I have drawn, as the lines moves towards the negative side, that means temperature is decreasing. Again the line is now coming this position, here temperature increasing. Again temperature decreasing, again temperature increasing, आउ decrease करिवो नाही. ना ये line रो meaning बुझा पड़ी जो समस्त को एबे everyone. ना इथरे कार डाउट अछि line Sir, जो ଆଉ stop अछि आउथरे देखो. First one मु कहली the line, this one here temperature is decreasing, this one is altitude, this one is what? Altitude. ये होची altitude है ना, और height बढ़ुची. जेतलो height बढ़ुची गोटी साइड रे में height, this one is thermal diagram or the thermograph, or I would say this one is thermograph. ठीक अच्छे, ये होची गोटे थर्मोग्राफ टाको मु ड्रॉ करिछि. टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग, देन इंक्रीजिंग, देन अगेन डिक्रीजिंग, देन इंक्रीजिंग, आउ डिक्रीज करिवो नाही. तले एटा कोन? ये होची तमर गोटे थर्मोग्राफ. ओके, टेम्परेचर को मु देखाउछि है ना एथरे. ना विथ टेम्प एटा रहबो एबे हाइट मु देखाइ दउछि. दिस वन वुड बी योर 16 to 18 किलोमीटर. दिस वन वुड बी योर स्ट्रेटोपोज 35 kilometer. The next one would be mesopause, that would be 80 kilometer. तापरे onwards आउ तार लिमिट नहीं, onwards आसो तुमर थर्मोस्फीयर चल. So this would be like this. Okay, so that means तुमर जेमते कि तुम देखिबो the troposphere, the first layer of atmosphere, the very first layer को हमें कहउछे कोन? Troposphere. This troposphere is the closest, हमें जाको अर्थ को लागि कि रहिछि, आर डेंसिटी होछि maximum. Now the density of this layer is maximum. Why maximum? The first point of this layer, important point, is that the density is maximum because the gravity is maximum. That is why density is also maximum. Hope this one is fine to all. Now the gases concentration जदि हम देखिबा, Yes, sir. also maximum. Gases मानकर concentration also maximum. चाहे से कार्बन डाइऑक्साइड कथा नहीं जाओ, चाहे से मीथेन कथा नहीं जाओ, बट गोटे गैसेस को छाड़ देबो O3 और ओजोन. ओजोन रो concentration would be, that would be stratosphere maximum है ना, ध्यान से मन रखबो. बट हियर वुड बी ऑल टाइप ऑफ गैसेस देखा जिवो, एंड हियर वुड बी डस्ट, तुमको एठी डस्ट भी देखा जिवो, वाटर वेपर्स भी देखा जिवो. एवरीथिंग कंसंट्रेशन वुड बी मोर इन troposphere because sources of gas being produced on the surface of earth. तेणु करके जेहेतु surface of earth रे gases are being produced, hence the overall concentration in the troposphere atmospheric gases would be maximum. Okay, now एठी तुमको देखा जिवो ना ए atmosphere रे कोन रहबो, this would be thick. तो एठी कोन रहबो, temperature decrease as I move in the troposphere है ना, as I move in the altitude of troposphere altitude रे जेतरा मूव करूची, the temperature will decrease.
the temperature will decrease. ध्यान से सुनो, the temperature will decrease. कहना थर्मोग्राफ को समझते देखी परिबो, this side is minus side and the temperature is decreasing. तो हमको सर केते decrease करिवो? Now where troposphere end, that would be tropopause. ताको मैं कौन कहबा? Tropopause. And that kilometer is what? 16 to 18 kilometer. The tropopause is what? Tropopause ortho means stop. Okay, pause ro meaning kono? Stop. So tropopause is means where the troposphere ends, that one is 16 to 18 kilometer altitude from the surface. Okay, now over the pole. Now these altitudes I have taken the numbers. These numeric numbers are over the equator. एमाने होची तमरो इक्वेटर ऊपरे. बट जदि मु पोल कथा कहबी, the tropopause जोटा होची it would be 6 to 8 kilometer. Confuse किछि होची काहाकू? Anyone? Now this altitude I have taken over the equator. बट जदि मु तमे मते कहबो कि सर जदि इक्वेटर ऊपर 16 ରୁ 18 किलोमीटर होची tropopause, then what could be the height or the altitude over the pole? That could be 6 to 8 kilometer. Done everyone? Okay, now तुमको एमिति कौन पे? Because the atmosphere of earth also को shape रहता है ball shape रे. The atmosphere also in ball shape, like the earth also in ball shape. Done everyone? now बुझा पड़िबन काको? Like the earth, like the atmosphere. Okay, so atmosphere also having ball shape. So that is why the tropopause in this pole and the pole will 6 to 8 kilometer, whereas it would be 16 to 18 kilometer because of the what? Shape of the earth. Done. now बुझा पड़िबन काको? Yes, sir. Now another factor कि काहे की ट्रोपोस्फियर बा जदि हम देखिबा एटमॉस्फेरिक जो अछि, ये पोल रे काहे की मनकर हाइट कम थाए. एमनकर हाइट पोल रे कम थाए बिकॉज़ पोल रे ग्रेविटी सबठो मैक्सिमम थाए. पोल रे कोन थाए हमरो जो ग्रेविटी वुड बी मैक्सिमम. आउ जदि ग्रेविटी मैक्सिमम रहिबो से अधिक पुल करिवो. सो बिकॉज़ ऑफ द मैक्सिमम ग्रेविटी and cold temperature, that is why the tropopause is 6 to 8 kilometer in what? Over the pole. So this is the two factor, cold, or that is the what? Coldness of that particular region, and the maximum gravity, because over the equator the gravity is least. Gravity is least over the 0 degree, and when it comes to the 90 degree it would be maximum at pole. That's fine to all. Okay, now comes to the so here would be अच्छा, ये जो तुमको थर्मोग्राफ मु ड्रॉ करी छी कि here as you could see, as I move, so here would be temperature is decreasing, then temperature increase करिवो, again temperature will increase. So empty draw करथली. Now this one is what? Your troposphere. As the temperature decreasing, now temperature decrease करूची कौन ପାଇଁ? Because of the normal lapse rate. Because of the normal lapse rate. Due to the normal lapse rate, the temperature is decreasing. Like here you can see this diagram, as this one is decreasing, temperature is decreasing. Why? Because of the normal lapse rate. Normal lapse rate कौन पढ़ाता ही थला तम मनु को जो मने पुराना स्टूडेंट को? What is normal lapse rate? With each rise of altitude, then 4 degrees Celsius will decrease. 6.5 degree temperature will decrease. with every 1000 meter, the temperature will decrease by 6.5 degrees Celsius. Now this one is called normal lapse rate. That means from the surface of earth, as I move every 1 kilometer, or that would be 1000 meter, the temperature will reduce by minus 6.5 degrees Celsius. Okay, this is called as normal lapse rate. Now normal lapse rate kahi ki, and this one is average. This one is what? Average rate. So here कौन रहबो? टेम्परेचर तमरा डिक्रीज करूची. तमको टेम्परेचर काहे की डिक्रीज करूची? Just because you have to remember, and you will remember. Temperature is decreasing because as you are moving from the surface towards the upper part,
तो तमरो अर्थ टेम्परेचर किए छाडुची ना एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ध्यान से मन रखो जो एटमॉस्फेयर टेम्परेचर अछि दैट टेम्परेचर ये टेम्परेचर किए कुआडो आसेला जो तमरो ये जो ट्रोपोस्फियर टेम्परेचर अछि याको कुआडो आसेला दैट बिकॉज ऑफ द अर्थ तार सोर्स की अर्थ सन नो ध्यान से मन रखो द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर सन इज नॉट द primary factor for the atmospheric temperature. Earth is the primary factor for the atmospheric temperature because अर्थ जो लॉन्ग वेव्स छाडुची ताकू ट्रैप करबा दिस गैसेस दैट मींस एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ऑफ प्राइमरी रीजन इज अर्थ इटसेल्फ rather than the sun. Done everyone? Hence what will happens as I move from the surface towards the what altitude the temperature will decrease kana height बढ़ेले obviously हमें sources to दूर को जाउचे sources के sources of heat the sources of heat earth itself ना बुझा पड़ेबन काको that is why temperature is decreasing hence it is called as normal lapse rate which is minus 6.5 degree temperature in सर earth with रिफ्रैक्शन सर रिफ्रैक्शन थ्रू रे कोन टेम्परेचर आसुनी अर्थ पखु रिफ्रैक्शन केमिति हबो एठी अर्थ टू केमिति रिफ्रैक्शन हबो ना सर ए जो सन पखुर जो आसुची हमरो ए जो रेडिएशन टा आउ नहीं सेटा अर्थ को जेतल नहीं पहुंचुची हाँ सेटा रिफ्रैक्शन काई के आसीबो डायरेक्ट तो आसी परिबो ना रिफ्रैक्शन है कि पोल को आसे जो तमे कहूच सन टू जेतेबेले आसे दिस रीजन विल गेट डायरेक्ट रिफ्रैक्शन है कि तमरो पोल को आसे कारण रिफ्रैक्टेड जो तमरो लाइट और एनर्जी दैट विल पोल रे पहुंचे बट हमरो एई जगह रे पहुंचे नहीं बुझी परछनी तो मेजॉरिटी ऑफ द अर्थ डायरेक्टली रिसीव करे बट रिफ्रैक्शन है कि तमरो पोल रे हायर लैटिट्यूड रे रिसीव हेइताय बुझी परछनी तो जा भी हो सेटा कहबा कथा कोन but that is receiving by whom earth किंतु atmosphere जो temperature that is not because of the sun कारण sun रो जो short waves थाए ताकू absorb करि परिबो नाही gases ना बुझा पड़िबो नेबे तेनु करी कि this one is not a primary reason for the heat in the atmosphere तेनु earth जोटा छाडे सेटा ही अधिक गरम कराए फॉर एग्जांपल मु तुमको कहूची जे माने भुवनेश्वर रे रहउचे हीट वेव तो सुनिथिबो ना ये हीट वेव्स काहे की होची ताले देखियो हीट वेव्स कोठी भी रोड ऊपर देखियो रोड ऊपर बहुत गरम थाए कोन पे रोड हीट को छाडुची ताले सोर्स ऑफ हीट की रोड बिकॉज से ताको कोन के जो एस्फाल्ट जाको हमें कोचे पिचू एस्फाल्ट दैट हैज ट्रैप्ड द हीट एंड दैट इज रिलीजिंग द हीट दैट इज व्हाई वी आर फीलिंग द मोर हीट अदरवाइज तमे जदि बिल्डिंग ऊपर को पळै जो किछि महला ऊपर को से हीट वेव्स नथिबो तुमको हीट फील हबो बट से वेव्स नथिबो okay so that is why surface is the main reason for that okay so normal lapse rate jogu temperature कम होची now comes to the second layer that is the stratosphere here because of the O3 presence or the ozone रो presence जोगु ओजोन साधारणतः 15 ରୁ 35 किलोमीटर मध्य रे देखा जाए that means जदि हमें ओजोन कथा कहबा O3 कले तीनटा हमें कहबा तो कोन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जाकू O3 बा ओजोन कहूचे ओजोन कोन करे हमरो गैसेस कोन यूवीज को कोन करे से यूवीज को ट्रैप करे है अल्ट्रावायलेट रेज को ट्रैप करे तेनु करे कि जो स्ट्रेटोस्फियर रे हीट बढ़े सो सेति पे थर्मोग्राफ्स तुम देखि परिबो टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड नाइटा काहा को बुझा पड़िबोनी सामिया बुझा पड़ुची तुमको एवरीवन आज्ञा सर मु यस सर डन टू ऑल everyone yes sir yes sir yes sir now the temperature Yes, sir, is yes, sir. again तो हमें देखिए temperature is here is what decreasing because of the minus हमें call it 6.5 degree normal lapse rate and again the temperature will increase here why because of the O3's presence एक कथा मन रखिबो कारण एठी तुम क्वेश्चन आसे so this one is stratosphere this one is troposphere in जदि हमें देखिबा एटा 0 डिग्री न्यूट्रल तो -5 -10 -15 एपट को गले तमरो माइनस चलला दिस साइड वुड बी 5 10 15 20 पॉजिटिव साइड तो दैट मींस एटी टेंपरेचर तमरो माइनस ही चलेला ते माइनस होबार कारण कोन बिकॉज़ ऑफ द नॉर्मल लैप्स रेट and here temperature is increasing again because of the ozone presence because of the what ozone presence
ना ओजोन लेयर होची 15 रु 35 और from the 15 to 35. That is the reason where the maximum intensity of ozone is present there. Once upon a time that there was a different layer called the ozone layer. Now that layer is subsumed within the what stratosphere. Everyone getting me? Now see, here is a stratosphere up to, that is the 35 kilometer, up to 35 kilometer. Now earlier what happened, it used to be your what, that means ame kaiba jota ki gote ozone sphere thila, and that ozone sphere jodi ame kariba, that ozone sphere is now subsumed. ye kon aichi subsumed. तो इटा 35 नहीं आपको 50 नहीं जाओ, सॉरी आपको 50 नहीं जाओ, it could be 50 kilometer. Now this would be 50 to 80 kilometer. Okay, this would be केते कहथिली 16 to 18 kilometer. Okay, now up to 35. तो आपको आमे गोटे डिफरेंट लेयर न करी ओजोन लेयर टाकू स्ट्राटोस्फियर रे मिसै देछु, है ना. दैट मींस तुमको जदी क्वेश्चन पचारिबो कि ओजोन सबुठो अधिक कोठी, तो सेठाला स्ट्राटोस्फियर. ओके, ना जदी गोटे क्वेश्चन एठी मु पचारिबी, देन व्हाई क्वेश्चन कि एठी ही काहे कि ओजोन अधिक मिले. एनीवन? बिकॉज़ ऑफ यूवीज. यूवी सर ना यूवीज कौन करे, लेट्स से O2 को से कौन करिबो स्प्लिट कर देबो, ओ कर देला, है ना. आउ गोटे O2 घुरी बोलुची, ए ओ टासी ता सेटा मिसी गेला O3. तो एमिति दैट मींस यूवी इज आल्सो रेस्पोंसिबल फॉर द मेकिंग ऑफ O3. ओजोन रो फॉर्मेशन रे किए हेल्प करे, यूवीज हेल्प करे. आ यूवीज कौन करे, तमर स्ट्राटोस्फियर रे यूवीज रो कंसंट्रेशन अधिक सेति पे. So here temperature will increase because of what? Ozone bro concentration. Now here you can see temperature increasing, here temperature decreasing. This type of condition called as temperature inversion. आपको कौन कह जाए? टेम्परेचर इनवर्जन. अर्थात कौन? अर्थात आमे जानिछो ऊपर को गले टेम्परेचर कमिबो, है ना. नॉर्मल लैप्स रेट रो अगेंस्ट रे जेबो. सिंपल जदी डेफिनेशन कहबी, जदी नॉर्मल लैप्स रेट प्रिंसिपल इज नॉट अप्लाइड, लैप्स रेट रो जो अछि, if this does not works, that means or anything is going against the normal lapse rate, that will amount to be that temperature inversion. Simple temperature inversion रो कंडीशन हैला, तले कूल रहिबो, ऊपर तमरो वार्म एयर रहिबो. So this condition जदी होउची, ताले आपको कहबा temperature inversion. Like here you can see, here is the warm, here is cool condition. So this is atmospheric inversion and naturally formation होची. Done everyone? इन्वर्जन रो मीनिंग बुझी परिबो कोन आइगला? सर आउथरे कहबे. मु कहले सिंपल, आमे जानछि आमे ऊपर को गले टेम्परेचर कमिबो, दैट इज द नॉर्मल लैप्स रेट 6.5 माइनस हे जिवो. किंतु कोन होए, केबे केबे ऊपर को गले टेम्परेचर मध्य बढ़े. फॉर एग्जांपल आमे स्ट्राटोस्फियर रे ओजोन रो प्रेजेंस हो, दैट मींस एठी टेम्परेचर कमिला पुनी बढ़िला. तो हियर इज टेम्परेचर प्लस, हियर इज टेम्परेचर माइनस. तो एई भले कंडीशन जदी होउची, दैट मींस दिस कंडीशन इज अगेंस्ट द नॉर्मल लैप्स रेट. नॉर्मल लैप्स रेट को टेम्परेचर कमिबो, किंतु एठी किछि एमिति कंडीशन अछि, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन और द एक्सेप्शनल सिचुएशन वेयर द टेम्परेचर इज राइजिंग, हेंस द वार्म एयर विल ओवरलाइंग द कूल एयर. तो एई भले कंडीशन को कुआजिबो टेम्परेचर इन्वर्जन. कारण एठी जो एयर अछि एटा वार्म रहइबो, कारण एठी टेम्परेचर प्लस रे अछि, एठी टेम्परेचर माइनस रे अछि. So it would be temperature inversion. Done to all? Yes sir. Now see here in mesosphere. Then comes to your what? Mesosphere. तापरे हमर next layer को जेतरा आसुचे, it would be your mesosphere. That means तमरो स्ट्राटोपोज रहइबो केते 50 किलोमीटर. पर ध्यान से मन रखिबो, स्ट्राटोस्फियर रे भी मध्य तुमको क्लाउड देखा जाए. These are the cirrus cloud. They are what? Cirrus cloud. जाको कहा जाए मदर ऑफ ऑल क्लाउड. वी विल आल्सो
go through that part, cloud part as well. Now here would be mesosphere. Next আমি যদি দেখি third layer is your mesosphere. The third layer is called mesosphere. सर है ना? हाँ. सर सर मेजोस्फीयर ଆଉ ଗୋଟେ ପେଜ ରେ କରନ୍ତୁ। थैंक यू सर। So this would be 16 to 18. This would be 50. Here we have 50. Okay. The first one up to 50. Sorry, we put 50. The 80. This would be 50. Then onwards. This would be troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere. Now comes to the mesosphere. Mesosphere kete 50 to 80 kilometer. 50 to 80 kilometer. Now jodi taman ko out ke likhi dauchi, this would be 0 to 18 kilometer. This would be 18 to 50 kilometer. Kota tamara stratosphere. Now 50 to 80 kilometer hela mesosphere. Mesosphere kon hobo, temperature will decrease. Temperature kon karibo, decrease karibo, है ना? ଆଉ ଏଠି ତମକୁ ସୁଟିଂ ଷ୍ଟାର ଦେଖାଯିବ। କଣ ଦେଖାଯିବ ତମକୁ? ସୁଟିଂ ଷ୍ଟାର। ରାତିରେ ଦେଖିବ କେବେ କେବେ ତମକୁ ଲାଗିବ ଗୋଟେ ଯେମିତି ତାରାଟା ଖସିଲା ଭଳିଆ। they are called as the what? Shooting star. So here you can have shooting star and also meteorite. meteorite ତମକୁ meteorite fall ଦେଖାଯିବ। meteorite ବୁଝିପାରିବ? meteorite fall କହିଲେ ବୁଝିପାରିବ ସମସ୍ତେ ଯାହାକୁ ଆମେ, है ना? तो Yes, sir. ये सब तुमको कोठी देखा मेजोस्फीयर रे देखा। ये क्वेश्चन मध्ये आसे कि मेटेओराइट फॉल कोठी अधिक देखा जाए, मेजोस्फीयर, है ना? शूटिंग स्टार कोठी देखा मेजोस्फीयर। आउ तमरो देन एरोप्लेन कोठी जीवो, स्ट्राटोस्फीयर। तमर जेते फ्लाइट वगैरह अछि ये स्ट्राटोस्फीयर रे जाए, ए माने एठे हकु जाय नै। दे विल ऑलवेज ट्राई टू मूव ओवर स्ट्राटोस्फीयर रे जानती, कारण एठी तमरो क्लाउड अधिक थाए। यदि तुम कह कहीं ताले एरोप्लेन वगैरह ये आमर स्ट्राटोस्फीयर रे जाए, बिकॉज स्ट्राटोस्फीयर रे कोन हुए, टर्बुलेंस थाए। जो मैंने हेलिकॉप्टर सॉरी फ्लाइट रे तो समस्ते जाइथो, एरोप्लेन रे देखिबो एरोप्लेन क्लाउड ऊपर मूव करे, कारण क्लाउड रे टर्बुलेंस हुए। दैट इज वे से क्लाउड ऊपर जानती सब बोले, सेति पे लैंडिंग कला बेले टर्बुलेंस टा हमको फील हुए। एंड होप नाउ यू आर गेटिंग मी। सो बिकॉज ऑफ द व्हाट वी कहबा टर्बुलेंस, है ना, बा इनस्टेबिलिटी, एटमॉस्फेयर इनस्टेबिलिटी जगु एरोप्लेन कोन करे, कोन हमरो स्ट्राटोस्फीयर रे जाए, ट्रोपोस्फीयर रे जाए ना। डन। Now comes to the mesosphere, जो कि मु कहली टेम्परेचर डिक्रीज करिवो, शूटिंग स्टार देखा जिवो तुमको, मेटेओराइट फॉल रहिवो, है ना? सो हियर वुड बी टेम्परेचर अगेन एठी कोन रहिवो, डिक्रीज करिवो। देन व्हाई टेम्परेचर डिक्रीजिंग हियर, एनीवन? मानसी कोन पे टेम्परेचर डिक्रीज करिवो, एनीवन? शुभश्री, शुभस्मिता, कोन पे टेम्परेचर डिक्रीज करिवो? बिकॉज ऑफ द नॉर्मल लैप्स रेट, because of the what? Normal lapse rate. So here would be normal lapse rate as acting in mesosphere, and it was also acting in troposphere, but stratosphere kahi kamo karu nathila because of the ozone ro presence. Done everyone? Naita bujha padben kahaku? Okay. So Done. Now there would be thermosphere. थर्मोस्फीयर टेम्परेचर बढ़िबो आउ कमिबो नाही। तुमको कौन पे? बिकॉज ऑफ द आयन्स, बिकॉज ऑफ द व्हाट? आयन्स, बिकॉज ऑफ द सोलार विंड, बिकॉज ऑफ द सोलार विंड। तो आउ टेम्परेचर कमिबार चांस नहीं, आ टेम्परेचर विल ओनली इंक्रीजेस एंड इंक्रीजेस। डन टू ऑल? ओके। तो ये थिला हमरो एटमॉस्फेयर कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। प्रथम हम कंपोजिशन पढ़ुଥିଲେ, सेकेंड रे हम देखले स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। सर किछि इफेक्ट नथिले ऑटोमेटिक तो टेम्परेचर कमिवो? किछि इफेक्ट नथिले माने
ମନେକର ଏଠି ଆୟନ ଅଛି ବୋଲି ସିନା ଟେମ୍ପରେଚର ଅଟୋମେଟିକ ବଢିଲା କି ଓଜନ ଅଛି ବୋଲି ସିନା ଟେମ୍ପରେଚର ବଢିଲା ମନେକର କିଛି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ରହିବନି ଅଟୋମେଟିକ ତ ଟେମ୍ପରେଚର କମିବ ଟେମ୍ପରେଚର କମିବ ଏଥିରେ କିଛି ଡାଉଟ ନାହିଁ ଟେମ୍ପରେଚର କମିବ ନା ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ factor affecting the distribution of insolation factor affecting the distribution of insolations. This would be the next topic. Insolation कहले बुझी परिबो everyone sun to जो हमरो आसुची electromagnetic waves ताको हमें कहू insolation or short waves or electromagnetic waves जहाँ कही पर short waves कही परिबो insolation कही परिबो electromagnetic waves कही परिबो which is coming out from the sun है ना ना factors controlling or affecting the distribution of insolation first मु लिखि दउची point first point is that angle of sun rays लिखि दे तो गोटे गोटे बुझेबी मु तापरे length of the day third point distance between the earth and sun fourth sunspots fifth atmospheric effect so these are the factors these are the what factors हम कहबा which is affecting the हमें कौन करछे insolations on the earth surface now first point कोन angle of the sun rays सर लैंडफॉर्म रो किछि कंट्रीब्यूशन रहबनी लैंडफॉर्म टा कंट्रीब्यूशन अछि जे किंतु बहुत माइन्यूट हे जाउछि बोली ताको हम एठी लेखुनी बुझ परछो ओके ओके फॉर एग्जांपल यदि तमे कहू सर लैंडफॉर्म लेट्स से फॉर एग्जांपल वैली एठी हेई पारिबो बुझ परछो के हियर वुड बी मोर टेंपरेचर हियर वुड बी लेस टेंपरेचर तो हेई पारिबो बट दिस वन इज ए माइनर फैक्टर सेति पई हम ताको नउने कना एमान को कहजे माइक्रो क्लाइमेट बुझ परछो so we are focusing on mesoclimate now that means I'm going first length of the I'm going oh sorry angle of the sun कोन angle of the sun now ध्यान से देखो sun rays रो angle केते हेई परिबो maximum होची 90 डिग्री जो हमर angle of sun rays मु लिखी छी maximum एते की तापरे 0 भी हेई पारे है ना तो 0 to 90 डिग्री वैरी करे फॉर एग्जांपल लेट्स से ये एठी होची तमरो सन हियर वुड बी सन हियर वुड बी परपेंडिकुलर 90 डिग्री तो धीरे 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 एठी कोन हे जो पैरेलल हे जो कना अर्थ से हमर सरफेस ता कोन केमिति है सरफेस ऑफ द अर्थ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज लाइक दिस है ना तेणु करी कि धीरे धीरे दिस सो हियर वुड बी व्हाट पैरेलल हे जिवो एठी आसिला पर एटा कोन हे जो पैरेलल हे जिवो ऑलमोस्ट एठी हमें 0 डिग्री कहबो होप डन एवरीवन सो मैक्सिमम सन रेज केते 90 डिग्री
and it could be 0 degree. Done. ना बुझा पड़बन काकू है ना. तो एबे देखो जते बेले 90 डिग्री होची the concentration would be maximum. जदि हम देखिबा concentration of heat would be maximum. कोन पई कारण एरिया टा कम थाए, एरिया would be less. Here what will happens, एरिया टा कोन रहबे तुमरो अधिक रहबो. म्यूट कर दियो जरा अनम्यूट अछि. Now comes to the, so let's say here रहला तुम्हारा sun, and from the sun जदि हमें देखिबा what is happening here, तो ये जदि हमें perpendicular by 90 degree जेतरो तुम्हारा sun rays टा 90 degree होची, that time the area would be कोन कम रही, कम area पहले concentration अधिक. नाइटा बुझा पड़बन काकू. Done everyone. नाइथरा बुझेबी. For example गोटे wall yes sir, is, yes. भाव गोटे wall, this one is a wall. कांथरे जदि हम इते सीधा टॉर्च पकेइबा तो अल्प एरिया रे सेतिकी लाइट पडुची, किंतु कांथरे जदि हम साइड हेई की लाइट पकेइबा साइड रु तो सेतिकी एनर्जी अधिक एरिया रे पडिबो, सो दैट कोन आइजबो इट वुड बी कूल रहिबो. बट जदि कम जगह रे सेतिकी एनर्जी है ना, आ सेतिकी एनर्जी तो बढ़ुनी, बस तार एरिया बढ़ुची कमुची, सेथि पई पोलार एरिया टा तुमरो कूल थाए. Because energy सेतिकी आसुची but area बहुत अधिक spread ही जाउची, concentrated form रे आसी पारु नहीं. Hope you are getting me. Okay, so that is why the angle of sun rays जोगु, and that is why जदि तुमको कुआजे जो tropical areas अछि, here is the more temperature but maximum temperature between the tropics area here, because the sun रो जो maximum movement थाए 23.5. ये तो जानी छ tiltation. Okay, done everyone. नाइटा आउ किछि एथर कार डाउट अछि. सर सन टू अर्थ केते परसेंट है आसुची था सनलाइट अर्थ सरफेस पे सेटा में हीट बजट रे कोइ एटा हीट बजट रे पड़ेगा. तो नाउ हियर वी विल गो थ्रू, फॉर एग्जांपल जून 23 21 टू 23 जून नै छ, एटा कोन रहबो तमरो समर सॉलिस्टाइस हो कि नै. इतरे तमरो सॉलिस्टाइस हबो जेंते हमर इक्विनस वर्तमान आसुची, आगो को आसीबो कोन तमरो इक्विनस भी हबो ना. इक्विनस बुझा पड़गन काको. इक्विनस को डेट रे पड़े जेंते कि मार्च 21 एंड 23 ऑफ सितंबर. सो जदि हमें देखिबा तले मार्च हमर कोन 21 रहइबो आ सितंबर रहइबो 23. तो एटा होचे हमर इक्विनस कोन रहबो पहले इक्वल डे एंड नाइट. पहले ए दीटा दिन रे डे एंड नाइट कोन रहबो इक्वल, पहले 12 एंड 12 बुझो. सेमती जदि हमें जून 23 कथा नै जे 23 जून एटा रहबो कोन समर सॉलिस्टाइस. ए कोन रहबो समर सॉलिस्टाइस. सेमती विंटर सॉलिस्टाइस केबे आसीबो डिसेंबर. अगेन से डिसेंबर 21 टू 23 भीतर पड़िबो 22 डिसेंबर है ना. तो दैट वुड बी आल्सो 21 टू नै कि 23 भीतर से भी आसीबो. तो ये रहबो तमरो विंटर सॉलिस्टाइस. तणु कर कि ये रहबो है ना. तणे एंगल हमें जति देखिबा, बट जेंती हमरो देखो हमरो कोन ओडिसा रे ताले हमें को मास रे अधिक टेम्परेचर साधारणतः खास करके अप्रैल ना. अप्रैल रे जदि तुम देखिबो अप्रैल और मे रे बहुत ही ज्यादा गरम हुए ओडिसा रे. मार्च 15 रु स्टार्ट हो जाए हमर हीट वेव्स हो कि नहीं. मार्च रो हीट वेव स्टार्ट हो जाए बिकॉज हमर लैटिट्यूडनल फैक्टर जो है ना. तो ये रहइबो इन एंगल. तो जेहेतु हमर ओडिसा कोन लो लैटिट्यूडनल स्टेट एंड इंडिया इज आल्सो मेजर पार्ट ऑफ इंडिया इज कमिंग अंडर द 23.5. हेति पई मैक्सिमम हमर ट्रॉपिकल एरियाज रे जाउची. नाउ कम्स टू द लेंथ ऑफ द डे. लेंथ ऑफ द डे रे हमें कोन करिबा. फॉर एग्जांपल जदि इक्विनोस होची, इन इक्विनोस जदि हमें इक्विनोस रे देखिबा इट वुड बी 12 एंड 12 इक्विनोस रे. बट जदि हमें देखिबा सॉलिस्टाइस रे, लेट्स से समर सॉलिस्टाइस रे डेटा केते घंटा हिजबो 14 घंटा and it would be 10 hours रहबो night equal to 24 hours. तो ये रहबो तोर इक्वेशन. सेमती विंटर रे जदि देखिबा नाइट टा 14 आवर हेइतो, डे टा हेइतो तमरो 10 आवर्स. विंटर सॉल जदि हम देखिबा
बुझिपारछे जोटा हम विंटर सॉल्स्टिस कहूचे। तो एमिति हमर कोन हेचो डे रो केतबे लेंथ बढ़ी जिवो डे रे केतबे लेंथ कमी जिवो। तो जेतबे डे रो लेंथ बढ़ुची अर्थात 14 घंटा अर्थ कोन करूची इन्सुलेशन को रिसीव करूची 10 घंटा रे से कोन करूची तल 10 घंटा रे तो छाडी परिबोनी सो दैट हीट सरप्लस हबो सेतपे समर रे हमको अधिक गरम लागे कारण हमर जो रिसीविंग टाइम ता होची केते 14 आवर्स ना बुझा पड़िबोनी देखा को 14 आवर हमें हीट को रिसीव करूचे बट राती रो ओनली 10 घंटा होची नाइट एंड से 10 घंटा रे ताको छाडी परिबो नाही सो इट वुड बी सरप्लस हीट रहेबो and that is why summer रे अधिक हमको टेम्परेचर फील हेई थाए डन है ना so that would be length of the day yes is well now the length of the day increases and decreases now जते बेले हमरो फॉर एग्जांपल जदी तुमको कहा जिवो तले अर्थ केते बेले सबटू क्लोजेस्ट हेई थाए सन रो एनीवन सबटू सन रो क्लोजेस्ट अर्थ केबे हेई थाए that would be December 21st December 21st रे अर्थ सबटू क्लोजेस्ट हेचे ताको कोन कहा जे पेरिहेलियन ताको कोन कहा जे पेरिहेलियन सो दैट मींस ये रहला अर्थ दैट्स द सन इज हियर तो सबटू क्लोजेस्ट केतल हुए दैट इज द पेरिहेलियन 91.5 मिलियन सो इट वुड बी 91.5 मिलियन डिस्टेंस किलोमीटर है ना तो सेटा रे तुम्हारा पेरिहेलियन ना एपेलियन मतलब कौन है एफ दैट मींस इट वुड बी एफेलियन सॉरी एफेलियन APHELION एफेलियन कहले मैक्सिमम डिस्टेंस एंड दैट वन इज व्हाट 94.5 मिलियन किलोमीटर sorry miles sorry kilometer no it would be miles sorry correct me it would be miles सर एफिलियन रो डेट हाँ हाँ कौन कौन सर इको हेलो जी सर एफिलियन हाँ एफेलियन के लिए मैक्सिमम डिस्टेंस 94.5 मिलियन दैट इज व्हाट माइल्स ना तमे सर को सेटा केबे हुए Okay. जून Date. दैट इज द व्हाट जून तो ये जून 21 टू से 23 भीतर ही आसीबे सर जोटी पेरिहेलियन रे मिनिमम डिस्टेंस रहउची ताले डिसेंबर रे के हीट एते इफेक्ट पडुनी के जना पडुनी बढ़िया क्वेश्चन ताले काहे की डिसेंबर रे तमे कहबो काहे की विंटर तो अरे सेम टाइम रे सदर्न हेमिस्फीयर रे कोन चले सेम टाइम रे सदर्न हेमिस्फीयर रे समर तो तांकू तो हीट फील होउची ना आज्ञा ना बुझा पड़िबोनी एबे तमे सिना भाबुछ हमकु विंटर होउची बट सदर्न हेमिस्फीयर सेतबे हार्ड समर चलथिबो ना डिसेंबर रे आज्ञा हो कि नहीं तो एका कथा हलानी तो सही दैट मींस दैट इज व्हाई जो क्लोजेस्ट बुझा पड़ुची कि नहीं अच्छा अच्छा आज्ञा सर yes sir yes sir तो ये थिला दैट मींस हमें देखले दैट इज द व्हाट पेरिहेलियन एंड एफेलियन तो सर गोटे डाउट हां को सदर्न हेमिस्फीयर रे साउथ पोल टा क्लोज जाउची नॉर्थ पोल काहे की क्लोज जाउनी केबे भी नहीं नहीं पोल केबे क्लोज हुए नहीं प्रथम कथा हैला केबे भी पोल क्लोज को जाए नहीं सबले कोन हुए अर्थ रो जो एग्जैक्ट शेप टा हमर होईची आंसर तुम देखिबो तो हमर एग्जैक्ट शेप ऑफ द अर्थ दैट इज बॉल शेप जाको हम कहूचे कोन बॉल शेप हां जाको हम कहूचे जियोइड शेप है ना तो ये जो तुम्हारा बॉल्स पार्ट दिस पार्ट इज द व्हाट बॉल्स पार्ट এই পার্টটা ক্লোজ हुए और दूर को जाए ये पोल केबे क्लोज हुए नहीं ये केबे क्लोज हुए कारण हमर एटा होची बाहरी की रहउची एठी हमर डिस्टेंसटा सबठु अधिक इक्वेटर ऊपर तणो एई पार्टटा ही क्लोज होबो एई पार्टटा ही डिस्टेंस होबो अच्छा सर ताले सदर्न हेमिस्फीयर देखिला बेलको सेही पार्ट रे कोन से कॉन्टिनेंट न थाई परंती प्राइमरीली पैसिफिक ओशन बोधे बेसी हीट पाउथिबो नहीं सेटा तो पुनी रोटेट करूची ना निज एक्सिस चारि बटे आज्ञा तो कॉन्टिनेंट भी आसी जिवो तो मैक्सिमम वाटर बॉडी अछि नो डाउट कि मैक्सिमम वाटर बॉडी अछि बोली अदरवाइज यदि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हेई थांता तो आउरी हीट हेई थांता
सर मते एटी डाउट आछी जो लानिना एलिनो होची ता धरे जो पेरू ସେଥିପାଇଁ कोस्ट और ऑस्ट्रेलिया ଡିସେମ୍ବର कोस्ट ସେଥିପାଇଁ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ସେଠି ଯୋଉ ତମର ଏଲିନୋ ପଢିଛ ଏଲିନୋ କଣ ଲେଖାଯାଏ କି ୱାର୍ମ କରେଣ୍ଟ ପ୍ରିଭେଲ ଇନ ଡିସେମ୍ବର ମନ୍ଥ ଡିସେମ୍ବର 25 କଣ ପାଇଁ ଚାଇଲ୍ଡ क्राइस्ट କୁହାଯାଏ ଏଲିନୋ କଣ हाँ हाँ କୁହାଯାଏ ଚାଇଲ୍ଡ क्रिस्ट ଅଫ चाइल्ड କ୍ରାଇଷ୍ଟ ତ ସେଠି କାହିଁ କୁହାଯାଏ କାରଣ ସେତେବେଳେ ହିଟ୍ ଅଧିକ ଥାଏ ଆଉ ଏଲିନୋଟା କଣ ୱାର୍ମ କରେଣ୍ଟ ହିଟ୍ ଅଧିକ आगे ହେଲେ ସିନା ୱାର୍ମ करेंट ହବ सर सब जमा पढ़थिली कोन एई फैक्टरटा लीक हे नथला थैंक यू सर थैंक यू तो ହେଇଯିବ ଏବେ now ये तमर गला length of the day and हम देखिले this factor also contributing the heat ये factor मध्य heat contribute करूछ now come to the distance है ना distance between the earth and sun now distance between the earth and sun को देखिबा एटा तो ऑलरेडी हमें पढ़ी देले कारण 8th रे हमें पढ़िले कोन that is the aphelion and perihelion सिंपल पेरिहेलियन कहले प्यार करना तो मन रहइबो कि भाई क्लोज आ जाओ बुझी पड़छ कि मतलब दिस वन इज फॉर द एंटरटेनमेंट ओनली टू रिमेंबर द थिंग्स मु कौन कंफ्यूज है जाए मतलब यार भाई तुम भागो अब जाओ आप जाओ मतलब समझ में आप जाओ मतलब दूर भागो अफेलियन मतलब आप भागो इधर से पर पास आओ तो इटा क्लोज एंड दिस वुड बी अवे तो ये रहेगो तो ये रहेला तुम्हारा थर्ड पॉइंट देन कम्स टू द सन स्पॉट नेक्स्ट पॉइंट कम्स टू द सन स्पॉट अच्छा एथरे आउ किसी काहा को डाउट अछि डिस्टेंस वगैरह का तो डाउट नहीं लेंथ ऑफ द डे वगैरह ही जो समझता नाउ कम्स टू द सनस्पॉट ना Yes, एबे sir. में देखिबा ना सनस्पॉट रे कोन हुए देखो आ गुटे ध्यान से देखिबो सनस्पॉट रे कोन हिताय ना व्हाट हैपेंस सन तो मत जानछे सन ना सन रो कोन हिताय कोन हिताय फ्यूजन कोन हिताय फ्यूजन न्यूक्लियर फ्यूजन हिताय हाइड्रोजन एंड हीलियम जब यू सो सन इज हैविंग थ्री एटमॉस्फेयर गोटे होची तमर कोन फोटोस्फीयर गोटे होची क्रोमोस्फीयर आ गोटे होची कोरोना okay nahi so three atmosphere sun is having three atmosphere तो largely हमें तारो atmosphere को तीन भाग रे भाग करते हैं photosphere chromosphere and corona ये तमर कोरोना सेही कोरोना नु कारण सेठी यही कोरोना बंची परिबो नाही ओके नहीं कोन पई एठी 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो कोरोना रे टेम्परेचर होची 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस डन Now what would be the surface temperature 6000 degree Celsius आंसर मन रखो सन रो जो फोटोस्फीयर जाका में कुछ फोटोस्फीयर here temperature is what 6000 degree Celsius but when it comes to the corona it would be 1 million degree Celsius okay so that would be ना chromosphere होचे transition atmosphere तो ये रहला सन रो atmosphere बाकी सनस्पॉट कौन now we will concentrate on the sunspot. I mean, देखिए sunspot. Now, sunspots are the dark area. They are the what? Dark area. They would be dark area. Sans समझो sun रो photosphere रे एमिति किछि patches देखा जो dark patches को कुआजे sunspot है ना तो that dark area को हमें कौन कहबा sunspot को कहते हैं तो ये dark area कौन है ये dark area रो का numbers there numbers will increase and decrease अतापि कहते 11 years रो गोटे cycle चले the number of dark areas of the sunspot will increase and decrease in a 11 year cycle तो तांकर जो cycle था that is 11 year cycles done everyone okay तो 11 year cycle चली था now what happens हमें एठी कोन पढुचे हमें पढुचे how the factor affecting the distribution of insolation सेथरे sunspot पढुचे how sunspot is responsible for the distribution of insolation on the earth surface so here what will happens you can see as the number of sunspot increases ध्यान से मन रखो as the number of sunspot increases the heat will increase ध्यान से मन रखो कोठी अर्थ सरफेस उपरे जदी नंबर ऑफ एटमॉस्फेरिक जो सनस्पॉट तमरा इंक्रीज होची देन तमरा हीट टा कोन रहबो इंक्रीज करिवो जदी सेटा कमउची देन हीट विल रिड्यूस ना बुझा पड़िबो नेबे द हीट विल
reduce. So ध्यान से देखो एठी तुमको उल्टा कांसेप्ट तुमको लागो नंबर ऑफ सनस्पॉट इंक्रीजेस दैट मींस कोन हीट टा कमिबो ना उल्टा जेते बेले सनस्पॉट दैट मींस कोन हिजबो बढ़िबो नंबर सेतरे हीट बढ़िबो और नंबर जदि कमिबो हीट विल आल्सो रिड्यूस द पॉजिटिव रिलेशन हमको एठी कोन देखा जबो वी आर हैविंग पॉजिटिव रिलेशन सनस्पॉट बढ़िले बढ़ुची टेम्परेचर सनस्पॉट कमिले कमुची टेम्परेचर है ना ठीक अछि त येटा कोन पई होची नाउ एवरीबॉडी शुड मतलब माइट हैव क्वेश्चंस कि व्हाई एंड व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस देयर फॉर एग्जांपल मु इजीली बुझाई कोन पर सपोज गोटे भाबो गोटे पाइप अछि पाइप रे तमे गछरे पानी दउछ ठीक अछि देखिबो जदे पानी को दूर को फिंगिया पि हेले तमे ता मुह रे हाथ देई थाओ हां कि नहीं ता मुह रे हाथ देई कि हमें कोन करू दूर को फिंगी थाओ पानी ए करथौ कि नहीं तो सेम आज्ञा जिंस एठी हुए एठी कोन हुए जेतरो नंबर ऑफ सनस्पॉट बढ़ी जाए तो ये जो स्पाइक जहा को मैं कहूची स्पाइक तो एमिति स्पाइक देखा जिवो सेमान पर लेंथ बढ़ी जिवो जेमति एठी वाटर लेंथ बढ़ुची सेमति जो सन फ्लेयर आसुची तारा लेंथ बढ़ी जिवो तारा लेंथ केते बढ़िबो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स सो दैट ये अर्थ सरफेस को इजीली पहुंची परिबो ना बुझा पड़िबो ने बे है ना तार कौन हो स्पाइक बढ़ी ताको हमें कौन कहूँ सन स्पाइक तो सन स्पाइक विल इंक्रीजेस एंड हेंस हीट विल आल्सो फील ऑन द अर्थ तेणु करी जेते बेले नंबर कमी जिवो स्पाइक विल आल्सो रिड्यूस डन एवरीवन आज्ञा सर सर एटा सन सन स्पॉट एटा कोन पाइप सदृश हबो सर सेटा पाइप सदृश अर्थात कौन होता है सुन कौन होता है यदि तुमको डिटेल आउट के जाने पे चाहूच फॉर एग्जांपल व्हाट हैपेंस लेट्स से गोटे सनस्पॉट एंड दिस वन इज अनदर सनस्पॉट ए एंड बी सो सनस्पॉट रो चारिपटे कौन होची ना हीट प्रोड्यूस होची ना लाइट्स आर कमिंग ताको हम कहचे कौन फोटोन्स द हीट कम्स इन फॉर्म ऑफ फोटोन्स लाइट फॉर्म रे आसुची है ना बुझी परछन ये जो लाइट अछि ये लाइट एठी जो प्रोड्यूस होची एठी कोन होची यार लेंथ बढ़ाइबारे हेल्प करूची ना कना ए एरिया टा ये जरा कैप्चर करूची तो एठी कोन हबो लेंथ बढ़ी जाउची कना दीटा एरिया भितरे तो जेते बेले कोन होची लेट्स से डिस्टेंस कमुची ऑब्वियसली डिस्टेंस कमले लेंथ बढ़िबो ना बुझी परछन जेते गोटे वेव लेंथ थिला ताकू तमे कोन करिवो कमे ऑब्वियसली तार कोन हिजबो इट विल इंक्रीज ए कोन हिजबो स्पाइक हिजबो बुझी परछन ये ताको कोन गोटे प्रेशर टाइप रो फील हबो एंड दैट विल रिलेट टू द स्पाइक ये कोन को स्पाइक करिवो सेति पे एमथि हेते सेति में ताको पाइप रे बुझाइली ताकि तुमको इजीली बुझी परिबो आ आर सेमति किछि मेकानिज्म नाही यस सर यस नाउ कम्स टू द नेक्स्ट हम देखबा एटमॉस्फेरिक इफेक्ट नाउ लास्ट पॉइंट हम देखबा कोन एटमॉस्फेरिक इफेक्ट तो दैट है ना ये हमें कौन देखुचे फैक्टर अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन है ना एबे हमें देखबा कौन दैट इज द इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर यदि इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर हमें देखिबा कौन हेता है ना इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर व्हाट विल हैपेंस हियर वुड बी केतरा जिंस जेमति कि तुमको रिफ्लेक्शन एडी रिफ्लेक्शन भी हेबो देयर वुड बी आल्सो डिफ्यूजन there would be diffusion there would be absorption there would be also absorption भी हे परिबो एठी आ कोन हे परिबो स्कैटरिंग भी तुमको देखा जो स्कैटरिंग दिस आर द ये तुमको देखा जो एटमॉस्फेरिक इफेक्ट रे एटमॉस्फेरिक इफेक्ट कोन देखा जो किछि रिफ्लेक्शन और जहा को हमको एल्बेड जहा को हमको कोन एल्बेड आगे नहीं तो एल्बेड कथा तो समझते जानी चाहिए एल्बेड कौन ना डायरेक्ट रिफ्लेक्शन है ना ताले हमें गोटे देखुचे फास्ट रिफ्लेक्शन लेट्स से हियर इज योर सन एंड अर्थ इज योर अर्थ ओके लेट्स से यदि तमरो जो इंसुलेशन आसुची एमती आसुची डायरेक्ट रिफ्लेक्ट है कि पुणी पड़ोची बुझी परछन तो ताको हमें को एल्बेडो दिस वुड बी कॉल्ड
albedo ना बुझा पड़िबनी डायरेक्ट रिफ्लेक्टिंग बैक ताको हमको albedo absorption किए करिवो gases किए करिवो ऑब्जर्व किए करिवो gases करिवो हां कि नहीं ऑब्जर्व किए करिवो gases will absorb ना बुझा पड़िबनी स्कैटरिंग किए करिवो डस्ट एंड अदर पार्टिकल्स ए माने कोन करिवे डस्ट एंड पार्टिकल्स स्कैटरिंग रे हेल्प करिवो ना बुझा पड़िबनी कहतु फाइन टू ऑल ऑब्जर्प्शन किए करिवो तमरो यस सर यस सर जेते हमर जीएजीस वगैरह अछि से माने ऑब्जर्व करिवो किछि ना स्कैटरिंग किए करिवो डस्ट करिवो पार्टिकल्स करिवो तो ये रहिबो ना आउ किछि हमर डिफ्यूजन हेबो है ना जेंति तमरो देखो जे लेट्स से वाटर रे कोन हिजो डिफ्यूजन हबो बुझि पड़छनी हां आउ किछि तमे कहछो के रिफ्रैक्शन मध्य लेट्स से रिफ्रैक्शन विल आल्सो देयर कने किछि लाइट रिफ्रैक्टेड है कि मध्य आसुछि फॉर एग्जांपल पोलर रीजन रे में देखिबा पोल तो डायरेक्ट इंसोलेशन रिसीव करेनी ना से रिफ्रैक्टेड इंसोलेशन को रिसीव करे ना बुझा पड़िबनी काहाकू फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्शन रो मीनिंग कोन आमे टॉर्च पकोची सपोज एठी टॉर्च लाइट टा पड़िछ किंतु आखो पाखो भी तो क्लियर दिखाई जाय ना हमको टिके तो दैट इज व्हाट रिफ्रैक्टेड लाइट that light is what because of the refraction हां कि नहीं सो तनु करके हमें सेमति हीट मध्य हमर जो हीट आसुची दैट इज आल्सो रिफ्रैक्टेड है कि तुमरो पोल को जाउची सर है ना पोल को ही काहे कि रिफ्रैक्ट हे की जाउची मीडियम चेंज हो सर रिफ्रैक्टेड मीडियम चेंज तो एठी पोल देखो रिफ्रैक्टेड सेटा मीडियम चेंज हेली ही हबो मो एबे क्वेश्चन रहला कि पोल रे काई होची तो ए ध्यान से देखो सपोज ये रहला तुमरो पोल ना सन केते जाई परिबो मैक्सिमम 23.5 ताठो अधिक तो मूव करि परिबनी अपरेंट मूवमेंट सन तो मूव करेनी और सन होची स्टैटिक मूव करे कि अर्थ बट ताको को अपरेंट मूवमेंट ना जेतला में अपरेंट मूवमेंट होचे मैक्सिमम से 23 हाफ जाई परिबो एबे जति मैक्सिमम 23 हाफ जाउछ रहिला तुमर केते एठी रहला 90 डिग्री हा कि नहीं बट एठी सन रेस ता कोन जो पैरेलल हे जिवो एते पैरेलल हे कि पळै जिवो ना तेनु रिफ्रैक्टेड हे कि लाइट ता एठी के आसीबो ना सरफेस को ना बुझा पड़िबो नै ये जेतले पैरेलल हे कि जाउची तो किछि लाइट एठी तो रिफ्रैक्टेड हे कि आसीबो ना मते सर से जिनछोडा बुझी होनी से रिफ्रैक्टेड हबो माने किस तो गोटे मीडियम चेंज होबा दरकार कि हां तो एटा तो डिफरेंट एटा तो एटमॉस्फेयर डिफरेंट लेयर ना ये एटमॉस्फेरिक लेयर ता डेंसिटी चेंज होबनी कि एठी जेतले तमरो डेंसिटी चेंज होबो तो रिफ्रैक्शन होबो जेमिति हमर रेयर रु डेंसर को गले जेतले रेयर रु डेंसर को जो टुवर्ड्स द नॉर्मल कि नहीं एठी कोन चेंज इन डेंसिटी सर ओनली एठी कोन सर रेयर डेंसिटी एठी कोठी आसीबो एठी माने हां एटा तमरो रेयर रहिला मैक्सिमम का एठी तमरो रहिला डेंसर तळटा डेंसर ना आज्ञा अच्छा हाई ग्रेविटी उपरटा रेयर ना उपरटा रेयर ना एटमॉस्फेरिक मु तो बुझौतिल सेति में स्टार्टिंग रु कि एटमॉस्फेयर डेंसिटी तळे हैला अधिक ऊपर को गले डेंसिटी कमी बिकॉज़ ऑफ द ग्रेविटी तो जेहेतु डेंसिटी अधिक तो एठी कोन रहबो दैट मींस रेयर रु डेंसर मीडियम को आसुची तो रिफ्रैक्शन तो हबो ही हबो एठी ना बुझा पड़िबो नै हां सर एबे सर बुझी होला कि एठी तीनटा फैक्टर भी रहउचंदी ग्रेविटी डिफरेंशियल सकासे भी ए जिनछोडा होची तो ये सिंपल तमे कहबो एटमॉस्फेयर थिकनेस बा में डेंसिटी मीडियम चेंज होउची एटमॉस्फेयर जेहेतु चेंज होउची तळो केटी डेंसिटी बढ़ुची तनो करे रिफ्रैक्शन हबो एंड दैट लाइट रिफ्रैक्टेड लाइट पोल रे पडुची सेथि पई तमे नॉर्वे वगैरह सुनिथबो के सेठी दिन बेला भी हमको सकाळ भलिया जेंति भोर भोर जेंति हे सेमिति तांको दिनटा सेया हां कि नै सुनिथबो तो सेठी केबे डार्क नाइट हुए नै कोन पई बिकॉज़ ऑफ द रिफ्रैक्टेड लाइट बुझी परछन तो रिफ्रैक्टेड लाइट तो डायरेक्ट आसीबनी ना डायरेक्ट आसीले तो हार्ड समर हबो जेहेतु रिफ्लेक्टेड लाइट दैट इज व्हाई सेठी आइस अधिक कना हेट कूल रहिबो सबुले रिफ्रैक्टेड लाइट अब केते हबो जेंति भोर रु बा संध्या बेले केते लाइट पाउचे हम बहुत कम लाइट रिफ्रैक्टेड है कना एनर्जी बहुत कम हां जेंति कोन से थ्रू आउट द डे माने डे नाइट एई भले मीडियम लाइट रहिबो हां मीडियम लाइट रहबो बस टिके लाइट कमिबो बढ़िबो जेते बेले डे हि जो टिके बढ़ी जिवो झापसा आलो हां झापसा आलो तो ये रहबो तमरो रिफ्रैक्शन बिकॉज़ ऑफ द रिफ्रैक्शन दैट विल हैपेंस इन द पोलर रीजन जेमिति तमे भाबो सिंपल आमे इवनिंग रे कोन होची जेतेले आमे देखुचे सन एपटे सेट ऑलरेडी ही जाईची
फिर भी देखिबो तुमको टिके आलु आलु देखाउची कोन पई काना सनलाइट ना दैट टाइम मूविंग स्पेस रे जाउची अर्थ को स्ट्राइक करूनी बट किछि लाइट रिफ्रैक्टेड हेकि आसुची सेथि पई हमको एठी टिके लाइट लाइट टिके टिके अंधारुआ होची बुझि परछनी आउ गोटे एग्जांपल आज्ञा दउची सर सपोज तुम आखा पगर गोटे दूर रे 50 लेट्स से 20 किलोमीटर दूर रे तमर गोटे सिटी अछि एठी हाँ बहुत सर लाइट एटा थिबो नॉर्मल तुम गाँ रे देखिबो तुमको टिके टिके से लाइट रो इफेक्ट फील हबो एटा कोन रिफ्रैक्शन आज्ञा तो ये रहिला हमें पूरा एटमॉस्फेरिक देखि देले दैट इज द फैक्टर अफेक्टिंग द व्हाट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंसुलेशन को कवर कले हमें आउ कवर कले एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर एंड गैसेस मध्ये कवर कर देले ये थिला पूरा आज हमें क्लास डिस्कस कर देले ना काले हमें आउ किछि एंती बेसिक जिंस गुडा टिके तुमको टाइम लागिवो बट बेसिक जिंस गुडा जतरो कवर हे जिवो तुमको तापर